Hello everybody, welcome to the new video. Today video is about the numerical differentiation, which is based on Lagrange's interpolation, and obviously this will be explained with respect to with calculator and MATLAB coding as well. Let's consider a specific case for Lagrange's interpolation, जिसके लिए हम उसकी डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं. And then the same thing can be extended towards a degree 3, degree 4, degree 5, and so on. Let's suppose we are given 3 points, then the second degree Lagrange's interpolation will be given by, this is the formula. In previous videos I already proved that how do we get this Lagrange's polynomial at degree 2, which will be fitting this data x0, y0, x1, y1, x2, y2. ओके यहाँ पे जो हमारा फोकस है वो इसी Lagrange's interpolation which is useful for unequally spaced data, जहाँ पे न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड मेथड्स जो हैं इक्वली स्पेस बेस्ड मेथड्स जो हैं they don't work. तो वहाँ पे फिर हम Lagrange की बात करते हैं. This point to be noted कि Lagrange जो है it can be used for equally spaced data as well. अच्छा, अब ये अगर आप इसको देखें, इसके दो तरीके हैं इसके डेरिवेटिव फाइंड करने के. इफ assume this is my y, okay, let's suppose this is my y and I want to differentiate that at x equal to something. So I'm interested in what? In dy by dx. It's a very straightforward thing. Okay, simply take dy by dx, which will be found by differentiating this term with respect to x, right? And then you will be doing the same thing with next term as well. Okay, d by dx of this term plus d by dx of this term. I'm missing something, I don't know. d by dx of the second term and similarly the third term. अगर हम यहाँ पे इसके डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो you see we have to apply product rule. So in case of product rule I'll be keeping this quantity as a whole fixed and finding derivative of the next term, this one जिसकी derivative 1 के बराबर है. Okay, and then I'll be taking plus. So let me write this term here. I'll write that is x minus x1 divided by x naught minus x1 into x naught minus x2 and then I can go for plus. Keeping in mind we'll be having y naught at the end, and then we have next time what do? We keep this part fixed, this one fixed, and what about derivative of this? I'm applying product rule. The derivative of this is also 1, so you get 1. In this case you'll be getting x minus x2 divided by, again the same thing, it will be x naught minus x1 into x naught minus x2. And then multiplied by y naught, right? Which could be further simplified as well, but it will be taking too long. If we have 3 factors here, जब हमारे पास यहाँ पे 4 पॉइंट्स होंगे, एक और पॉइंट आएगा तो इसमें यहाँ पे 3 फैक्टर्स होंगे, यहाँ पे 4 टर्म्स होंगे, तो ये बड़ा लंबा हो जाता है. We'll do same thing for the next term as well. We'll do same thing for the next term as well. अगर आपके पास सपोज करें अभी ये डिग्री 3 का पॉलिनॉमियल है तो यहाँ पे 3 फैक्टर्स होंगे और उन 3 फैक्टर्स को फिर हम क्या करते हैं, उनको फिर हम यहाँ से ऑब्वियसली प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे जिसमें यहाँ पे 2 को फिक्स रखना होता है पहले,
तीसरे की डेरिवेटिव लेते हैं और फिर बाकी दो को फिक्स रखते हैं, इसकी डेरिवेटिव लेंगे और फिर इन दोनों को फिक्स रखते हैं, यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे, तो काफ़ी लंबा हो जाता है। इसलिए यूजुअली वी सजेस्ट कि आपने करना क्या है कि आपने पहले ये एज अ होल L2 पॉलिनॉमियल फाइंड करना है एज इट इज़, जैसा भी आता है L2x, चाहे डिग्री 2 का हो। लेट्स सपोज अब यहाँ पे बात कर रहे हैं L2x आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x0, x1 and x2 and y0, so we'll be getting a polynomial of the form ax square, when you simplify that, plus bx plus c, and then we have plus something, yeah, अगर हमारे पास second order है तो इसको as I already called that y, and then you simply apply power rule to find derivative of this function. So it will be dy by dx. It will give you something like, we'll see, that will be 2ax plus b. It's very simple and straightforward. तो अगर आप लेग्रांज को यूज़ कर रहे हैं तो आपने इस तरीके से करना होगा। इट्स अप टू यू। आप पहले यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें, हर एक प्रोडक्ट को अप्लाई करें, चाहे 3 टर्म्स हो चाहे 4 टर्म्स हो, और फिर इसके बाद हर एक टर्म में वैल्यू पुट करके फिर उनको ऐड और मल्टीप्लाई सेपरेट करेंगे तो बड़ा लेंथी हो जाता है। इसलिए बेटर कि आप इसी लेग्रांज में ऑलरेडी हैव अ प्रैक्टिस, तो आप इसको कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें हमने वी हैव डन दैट for a specific example. If you want to find derivative of this function log of x, whose values are given for these 3 points, right? Because if you have 3 points, you'll be having quadratic interpolating polynomial. So for x equal to 2, the value is this one. For x equal to 2.5, it's this one. For x equal to 3, or this one. अब देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम इसका पहला जो वो है टर्म है उसको फाइंड कर रहे हैं, 2x square minus 11x, just to see that it's x minus 25 into x minus 3 divided by minus 0.5, because of this 2 minus 2.5, and then we have 2 minus 3, we get that one. For the second term, second coefficient is to what? It's simply x minus 2 into x minus 3, and then 2.5 minus 2 and 2.5 minus 3 is set and divide that. And then we have a third term as well. And when you simplify it, we get what? We get a polynomial of this form. You see, 2x squared, the first term multiplied by the y0, second term multiplied by the y1, and third term multiplied by y2. And when you simplify this, we get this polynomial. See? अच्छा, अब ये हमारे पास वो y आ जाएगा। अगर यहाँ पे आपने इसको इंटरपोलेट करना है तो ऑब्वियसली आप सिंपल इसमें वैल्यू पुट करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि इसमें 2.5 की वैल्यू फाइंड करें तो अगर आप x की जगह 2.5 पुट करें, यू विल गेट दिस वैल्यू वी हैव डन हियर। अगर आप इसके डेरिवेटिव आप चाहते हैं तो आप सिंपल इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यू विल बी टेकिंग dy by dx, okay, that's dy by dx, it is equal to अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो -2 multiply by this value which is 0.08164 into x plus 0.8136 और थर्ड टर्म कांस्टेंट है तो उसकी डेरिवेटिव सिंपली 0 हो जाएगी। अब आप जिस पॉइंट पे भी इसकी डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यू वांट टू फाइंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2.7, तो आप यहाँ पर x की जगह 2.7 पुट कर देंगे, यू विल गेट डेरिवेटिव एट दैट। It's obviously very simple and straightforward. I already explained in last videos. You can watch those videos. How do we construct this polynomial by using Lagrange's interpolation? Okay. Now, can we do same thing by using calculator? So the answer is same. You don't need to find this polynomial. You can simply insert that setup we explained in calculator. Okay. ये जो स्टेप्स हम डायरेक्ट कर रहे हैं इसको हम डायरेक्ट पुटिंग करेंगे यहाँ पे और इसको फिर हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं। Okay, but in that case obviously you'll be finding different terms, the first term, the second term, the third term. If you do all terms together, it will be obviously a little bit time consuming, or maybe calculators say I don't have that much memory, और हमारे पास फिर वही है कि हमें x0 चाहिए, x1 चाहिए, y0 चाहिए, y1 चाहिए, और शायद हमारे पास फिर वो वेरिएबल्स जो होते हैं वो भी नहीं होते। इसलिए हम टर्म बाय टर्म फाइंड करते हैं, इसकी डेरिवेटिव अलग से फाइंड कर देते हैं, इसकी डेरिवेटिव अलग से फाइंड करते हैं, इसकी अलग फाइंड करते हैं और फिर इन सबको ऐड कर देते हैं। दैट्स द वे टू डू इट बाय यूजिंग कैलकुलेटर।
So I'll be solving this example and I'll be simply taking derivative of every term by using calculator. Okay, so let's clear this. You can just clear everything from here. Say I want memory to clear. So it is done. So it should go back. Again, as I said earlier, I'm saying again and again, calculator का mode जो है that must be in uh, math mode, which can be obviously done by pressing this button and then pressing 1. अच्छा, अब यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं वो यही है कि हमें डेरिवेटिव चाहिए. So I'll simply press this d by dx, and then I'll introduce this symbol in between it to put the value. So if c, अगर इसको मैं a कह दूँ, इसको मैं b, इसको मैं c, और these are my y values, so I'll be finding them term wise. Okay, derivative obviously term wise जब ये मुझसे सवाल पूछेगा किसी भी point पे. If I'm interested to find derivative at 2.7, so how would I get this value? Later on, I'll be doing that with MATLAB as well. Okay, so what do? We see x, and now x is my what? X is my now 2.7, but I'm not giving this value at the moment. So I'll simply press first this bracket, and I'll take x. Okay, so I'm taking x minus b because I'll starting this way. So I'll be taking x minus b. This is my b. Then I close the bracket, open the bracket, and then I take x again because I'll be taking x minus c as well. So let me take x minus c. Okay, close the bracket, and then come down to the next term. That will be x naught minus x1. So x naught is a. So let me now call a. I'll take a minus b. And then I'll just close the bracket, open the bracket, and then I'll take a minus c. Press that. So alpha, and then I'll go to c, and then close the bracket, and then we multiply this with the y, the value of y, which will be changing obviously for each term. So I just go there and I put y, and then I'll be taking derivative at x as well. So I'll just put x here just to find the value at x. So for the first term, the derivative would be what? I just press calc. It will be asking from me x. So x is my 2.7. So I'll just give 2.7. Then I press equal. Then the b is 2.5. Okay, I just press equal. Then my c is 3. Okay, so I press equal. And then it asks me for a as well. So a is my 2. And then it will ask me about the y, which is 0.69315. 69315. So it gives me the derivative of the first term, which will be obviously minus 0 point something. So if I could write it somewhere, let's go to this point. The first term is giving me the value like if I want to go for this point, it is already computed, so it's minus 0 point something. And it was 0.13863. 13863. And then I will simply put in plus 2 to find derivative of the second term. Now, how would I do this the second term? So I can do that by simply going to this one to. अब देखिए, अब दोबारा मैं इसमें इक्वल जब प्रेस करूंगा तो ये मुझसे फिर से x मांगेगा. तो x तो ऑलरेडी हमारे पास है 2.7 है. वी आर नॉट चेंजिंग दैट. फिर इसके बाद अब ये मुझसे b मांगेगा. अच्छा देखें, b अब चेंज होगा. अब ये मेरे पास b होगा, ये a होगा. So I'll just put b to be 2,
and C to be 3. That's already okay. A is now 2.5 because of second term में change जाते हैं यहाँ पे आ जाएगा तो A is my 2.5 now. My Y is now 0.9162. So that will be 0.91629. Press equal, it will give you the next term for variable at x equal to 2.7, which is minus 1.466064. This again will give you minus 1.6 466,064 466,064, and then we go to the next term. For next term again you'll be pressing equal button. It will again ask for x, which is 2.7. B is okay now, and let me go to the numbers. अच्छा, अब इसमें मैंने b को क्या पुट करना है, b2 ही रहेगा. अब ये दोनों c और a जो है ये आपस में इंटरचेंज होंगे, तो इसको अब मैं c कहूँगा. तो मैंने प्रेस, इट में आस्क मी c, सो c विल बी नाउ 2.5. ठीक है, and a is now 3. Y will be 1.09861. ये वैल्यू साथ में आपको क्या हो जाएगा, ये आपके पास अब y की वैल्यू है. And then we simply press equal to get 1.97747. अब इसी में हम वो जो वैल्यूज हमारे पास हैं उनको डायरेक्ट ऐड कर देते हैं. तो हमने इसे पहले डिफाइन किए हुए हैं, ऐसा ऐड कर देते हैं. वी कैन सिंपली गो फॉर इट. ये वैल्यू वाले हमारे पास है तो हम कर लेंगे माइनस 0.1368 1386 and then 3 minus, then we take 1.4, okay, 66064, and then we simply press equal button to get 0.372804. So that's the derivative at x equal to 2.7 for that specific function, which was done very efficiently and accurately. I hope you understood that. Now we come towards move towards MATLAB code. How to do that? See, हमें x की वैल्यू चाहिए होगी, हमें y की वैल्यू चाहिए होगी. ठीक है, तकरीबन सेम ही है जो हमने इसको फाइंड किया था Lagrange इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल के लिए. यहाँ पे हम डेरिवेटिव्स की बात करेंगे. That's why we call it diff underscore Lagrange underscore polynomial xy. लेंथ ऑब्वियसली जरूरी है क्योंकि हमें सारे टर्म रिपीट करना होते हैं. हमें a सिंबॉलिक करना है, हमें d सिंबॉलिक करना है. d जो है असल में वो वेरिएबल आते हैं यहाँ पे, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं x minus x और x minus x1 x minus x2. यहाँ पर जो x है जो वेरिएबल इसकी वैल्यू जहाँ पे हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे हमने a लिया हुआ है ध्यान में रखना. ठीक है, और p जो आउटिंग पॉलिनोमियल होगा जो कि सिंबॉलिक होगा भी, ये ध्यान में रखना है. तो ये वही कोफिशिएंट्स हम फाइंड कर रहे हैं. b के जो कि डिनोमिनेटर में आते हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं x के, बिकॉज जब j और k बराबर नहीं होंगे तो फिर इनको हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं. और ऊपर भी वही है, लेकिन यहाँ पर अब x की वैल्यू x की जगह हमने a यूज किया हुआ है, ये असल में किया जाता है. Right? और फिर इसके बाद जो पॉलिनोमियल है, एवरीबॉडी नोज दैट वी सिंपली फाइंड दिस कोफिशिएंट, दैट इज yk डिवाइडेड बाय bk. Okay, that's the ck, and then it's simple take the ck, ये y के जो फंक्शन की वैल्यूज हैं और bk जो नीचे आ रहे हैं टर्म्स ये वाला, और साथ में हम ये dk को मल्टीप्लाई कर देते हैं जो कि ये a माइनस वगैरह वगैरह आएगा. और ये ऑब्वियसली p जो है ये भी सिंबॉलिक होगा. d हमारे पास सिंबॉलिक है और a हमारे पास सिंबॉलिक है. लेकिन हमारे पास जो बेसिकली रिजल्ट फाइनल चाहिए वो क्या होना चाहिए हमारे पास, वही वी शुड बी इंटरेस्टेड इन the derivative. Okay, check what are the values. It's okay, so अब हमने करना क्या है, we have to give the values of x which are 2, 2.5 and 3. They are simple. We have to go for the values of y which are to be taken as something like log of x. We do that. So y is 0.6931
एंड देन वी सिंपली रन दिस कोड। इसको हम रन करेंगे, ये जो कोड है, और आपने इसको कॉपी करना है सिंपली, इधर आप टाइप करें या पेस्ट करें, सब यू। सो एक्स ऑलरेडी डिफाइंड हो गया है, वाई डिफाइंड हो गया, देयर इज नथिंग टू बी डिफाइंड एक्सेप्ट दिस टू। सो वी आर हैविंग दिस पॉलिनोमियल। ये पूरा हमारे पास क्या आ गया, ये पॉलिनोमियल आ गया है जो पी पे डिपेंड, ए पे डिपेंड कर रहा है सर। यहाँ पे पहले में आता है a माइनस टू इंटू ए माइनस फाइव बाई टू एंड सो ऑन, राइट। तो इसके हम अगर आप यहाँ से आप इंटरपोलेटिंग वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, या अगर यहाँ पर हम उसके डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो व्हाट डू वी डू, इज सिंपली टेक डिफ, और उसके बाद फिर वो डी एफ कह देते हैं, एंड देन सब्स्टिट्यूट अपने वैल्यू करना है। ओके, दैट इज या सब्स्टिट्यूट, फॉरगेट अबाउट 1 over h, यहाँ पर 1 over h नहीं होगा। Okay, and we call this one simply p now, it's not p। और यहाँ पे जो हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं वो है 2.7। हम यहाँ पर 2.7 इसके डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि भाई आप क्या करो, पहले इसके डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू p ले लो और इसके बाद फिर इस p की जगह 2.7 पुट करो। जैसे में रख लें, यहाँ पर ये जो p है ये बेसिकली वही पॉलिनोमियल, और हम ये x की वैल्यू पुट करेंगे जिसको हमने a कहा हुआ है, तो हम यहाँ पर a की जगह 2.7 पुट कर रहे हैं। एंड जस्ट इनपुट दिस वैल्यू, और फिर इसके बाद अगेन इसको हम एवेल्युएट कर देते हैं, बिकॉज ये नंबर अजीब सा जाता है, इसको हमने df कहा था। या this is 0.3728, I think it's almost similar, yeah, 0.3728. So we got the same value from calculator and from MATLAB as well. So thank you very much for watching this video. If you have any question, you can simply write that question in the comments. I'll get back to you if you have any query, any question, any confusion. So don't hesitate, feel free and ask me questions. Thank you very much. See you in any other video.